श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव. अथ ध्यानं. शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभसुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं. य ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवंस्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यसामगा ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तन विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. कृष्णात् पर किमपि तत्त्वं न जाने देव मे दर्शय देवरूपम्. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः मामका पाण्डवाचैव किं कुर्वत संजय. संजय उवाच. दृष्टा तु पाण्डवानीक दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मम व्यूढादुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युधान विराट च द्रुपद च महारथ केतु च कितान काशीराज च वीर्यवान पुरंजी कुंती वज च शैब्य च नरपुंग युद्धामन्यु च विक्रांत उत्तमोज च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेय च सर्व एव महारथा. अस्माकं विशिष्टाये तान्नी बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्थ तत्सज्ञात ताम्र विमिते भवान् भीष्मच कर्णच कृपच समिंतिज अश्वत्थामा विकर्णच सोमदत्तिस्तथैव च अन्यच बहवः शूरा मध्यर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्त तदस्माक बलभीष्माभिरक्षितं पर्याप्तत्विदमेतेषा बलभीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सैन्यानि अनहर्ष क्रुरुद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योचे शंखदद्मौ प्रतापवान ततः शंखाशभैर्य च पणवानक गोमुखा स सेव्याभ्य हन्यस्त न शब्दस्तु मूलभवत. ततः श्वेतैर्हये युक्ते महती सन्दने स्थितो माधव पाण्डव चैव दिव्यो शंख प्रदद्मतु पञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जय पौण्ड्रदद्ममाशंख भीमकर्मारुकधर अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पको काश्यच परमेश्वाच शिखंडी च महारथ दुष्टदिम्न विराट च सात्यकीच्या पराजित द्रुपद द्रौपदेय च सर्वश पृथ्वीपदे सौभद्र च महाबाहु शंखादद्मौ पृथक पृथक सघोष दातराष्टाना हृदयानि वेदारयत नभच्च पृथ्वी चैव तुमुलव्यनुनादयन अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्टाना कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसंपादे धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते. अर्जुन उवाच. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथस्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् केमर्यास योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे यस्य मानानवेक्ष्य एतेऽत्र समागता धातराष्ट्रान् दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव. संजय उवाच. एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयिता रथतमः भीष्मद्रोणप्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्येतान् समन्वेतान् कुरुन्निति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन्नत पितामहान् आचार्यमान् तुला भ्रान्तु पुत्रापौत्रा सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धूनवस्थितान् कृपया पराविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच. अष्टेम स्वजन कृष्ण युयुष समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखच्च परिशुष्यति व्यपत्तु च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवस्त्रसते हस्तात् त्वचैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे न काङ्क्षे विजय कृष्ण न च राज्यसुखानि च कि न राज्येन गोविन्द कि भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षित न राज्यभोगासुखानि च त इमे वसिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुरा श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुकिनो मयि कृते निहतधातराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्त्वेतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वय हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव. यदप्यनेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकं कथननेयमस्माभिः पापदस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृष्ण मधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय श्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णसंकर
संकरो नरकायव कुलज्ञानाकुलस्य च पदन्ति पितरो हेषा लिप्तो पिंडोदको क्रिया दोषेरिते कुलज्ञान वर्णसंकरकारके उस्यादन्ते जाती धर्मा कुलधर्माचे शाश्वता उसन्न कुलधर्माणा मनुष्याना जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुषम अहो बत महत्पाप कर्तव्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोपेन हन्तु स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतिकारमशस्रशस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवित संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्य उपाविशत विसृज्य सचर चाप शोकसविघ्नमानस ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विशदन्तमिन्दवाक्यम् उवाच मधुसूदनं। श्रीभगवान् उवाच कुतस्वाकश्मलमिन्द विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्तिकरम् अर्जुनं क्लब्यमास्मगम पार्थ नेतत्वयुपपद्यते शूद्रहृदय दौर्बल्यतक्ततिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कत भीष्मम सांख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोस्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुन् हन्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुपेक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेतदिन कतरन्न गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कापर्णदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेता यच्छेयस्यान्निश्चित ब्रूहीतन्मे शिष्यस्ते शाधिमात्वा प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानपनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्नं वृद्ध राज्यसुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न योस्ते इति गोविन्द मुक्ता तृष्णी बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिन्दवच। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचत्व प्रज्ञावादच भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाह जातु नास नत्व नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मार्तास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तान्तिस्तिक्षक्ष्व भारत यहि न व्यथयन्ते ते पुरुषर्षभ समदुःख सुख धीर संवृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टोन्न तन्नयोस्तत्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विधि येन सर्वमिदततम विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत येन वेत्ति हन्तार यच्चेन मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिन नित्योय एनमजमव्ययम् कतस पुरुष पार्थ क घातयति हन्ति कम वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नि संयान्ति नवानि देहि नैन चिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैनैन क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेदेयमदाह्योऽयम् क्लेद्योषोच एव च नित्य सर्वगतस्नाणुरचलोय सनातन अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि अथ चैन नित्यजात नित्यवामनसे मृतं तथापि त्वमहाभावो नैव शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवमृत्यु ध्रुव जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न त्वशोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति श्रोतापेन वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यमवदय देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वशोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धाश्रयो नक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्न स्वर्गद्वारमपारुतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिम धर्म संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि अकीर्तिजापि भूतानि कथ इष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरत मन्यमस्यन्ते त्वामहारथा एषा च तव बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाचवादाच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरनु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो तत्तो युजस्व नैव पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि न्यायाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रतिभय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दनं बहुशाखाह्यनताच बुद्धव्यो व्यवसायिनां यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्य विपच्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति निवादिनं कामात्माना स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषा बहुल भोगेश्वर्य गतिप्रति भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तया परुतचेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धी समाधो न विधीयते त्रगुण्यविषया विधा निश्रेगुण्यो भवार्जुन निद्वद नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान यावानथ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गस्वकर्मणि योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्ता धनञ्जय सिद्ध समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दुर्णयवर कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तो जातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मज बुद्धियुक्ता हि फलत्यक्ता मनीषिणं जन्मबन्धर्विनिर्मुक्ता पद गच्छन्त नामयं यदा ते मोहकलिल बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिगे प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्र भिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चाय कुरुमङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोप्यस्य परद्रष्टा निवर्तते एततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चित इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभमन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामक्रोधोद्भिजायते क्रोधात् भवति समूहः समूहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियचरण आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणा हि चर्ता यन्मनो विधीयते तदस्यार्थी प्रज्ञा वायुर्नावमीमांबसि तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागति संयमी यस्या जागति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रवश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाचरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहयसि वमे तदेकवद निश्चित्य येन श्रेयो हवाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्येन कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा निष्कर्म पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिसमाधि गच्छति न हि कच्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते अवश कर्म सर्वप्रकृतिजयगुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थां विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतकुरु कर्म कर्मजाय ह्य कर्मण शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मण यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकय कर्मबन्धन तदर्थकर्म कौन्तेय मुक्तसंगसमाचार स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोत्तिष्ठ कामधुक् देवां भावयतानेन ते देवा भावयन्तु
परस्पर भावयंत श्रेय परम वाप्सत इष्टाभोगानी व देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एवस यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यन्ते ते त्वग पापा ए पंचदात्मक कारणात अन्नात भवती भूतानि पर्जन्यादन्न संभवम यज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव असि विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एव प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयति हय अघायोरिन्द्रियाराम मोघपार्थस जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्यात्मतृप्त च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो नाकृतेनेह कञ्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थ व्यपाश्रय तस्मादसक्त असतत कार्य कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मण्येव हि संस्थिति मास्थिता जनकादय लोकसंग्रमेवापि संपश्य कर्तुमहसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत्प्रमाण कृते लोकस्तदनुवर्तन्ते न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि यदि येन वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश अस्ति देयोरिमे लोकान् कुर्या कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विन्वासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदास्तसासक्त किचिर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेद जनयेद ज्ञाना कर्मसंगिनाम जयस्य सर्वकर्माणि विद्वानुक्त समाचरण प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा संजते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदा कृष्णविन्न विचालयत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतजर एमे मतं मिन्द नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमुण्डास्तान् विद्धि नष्टान चेतस सदृशचेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतियन्ति भूतानि निग्रह करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तर्यनवशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच कथ अथ केन प्रयुक्तो य पापचर्ति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवम् महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शोन्मलेन च यतल्बलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्त्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् स्वन्मिन्द्रियाणान्द्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एव बुद्धे पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जयी शत्रु महाभाव कामरूप दुरासुदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत एव परम्परा प्राप्तमें राजर्षयो विदु सकालेनेऽहमता योगो नष्ट परन्तप स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्तमो पुरातनम् भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरभवतो जन्म परजन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयातो मादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यवेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वितरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भवज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश काङ्क्षत कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा
चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मा विधय कर्तारमव्ययम् न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा यो विजानाति कर्मभिः स बध्यते एव ज्ञात्वा कृतकर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वे पूर्वतर कृतं किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्यपि बोधव्य च विकर्मणः अकर्मण च बोधव्य गहना कर्मणो गती कर्मणे कर्मय पश्यद् कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडित बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रिय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स निराश्रित चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबन्धते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितो चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञ योगिन परिपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्यति तत्रान्येन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे अध्याय ज्ञान यज्ञ च यतय संशितव्रता अपाने जुयति प्राण प्राणिपान तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुयति सर्वपेते यज्ञवितो यज्ञशपित कल्मषा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायलोकस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानाज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यवशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनेव रुजिन सन्तरिष्यसि यतेन्दासि समिद्धग्नि भस्म सांकुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सांकुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयोग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति श्रद्धावल्लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानलब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धाधान च संशयात्मा विनश्यन्ति नायलोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः योगसन्यस्त कर्माण ज्ञानसच्चिन्न संशयम् आत्मवन्त न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्माद् ध्यान सम्भूतं हृस्तध्यानसीनात्मनं चित्वेन संशययोग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोग नाम चतुर्थोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासकर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्च एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवान् उवाच संन्यासकर्मयोग च निःश्रेयसकरा उभो तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निद्योदहि महाभावो सुखबन्धा प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्ति सम्यक् गुभर्यो विदन्ते फलं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकसंख्यच्च योगच्च यः पश्यन्ति स पश्यन्ति संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्य शृण्व स्पृश जिघ्रघ्न छघ्न स्वपश्वसन प्रलपन्विसृज गृहन्नु निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियातेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्धया कैवल्येरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गत्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति कि नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबन्धते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखी अवशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते
नादत्ते कसचित् पाप न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यते जन्तव ज्ञानेन तु तद्ज्ञान एषा नाशितमात्मन तेषामादित्यवज्ञान प्रकाशयति तत्परं तदबुद्धयस्तदात्मानं स्तन्निष्ठास्तपरायणां गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्दोष कल्मषा ज्ञाननिर्धुतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन इहेव त्यजित सर्ग एषा साम्ये स्थितः मनः निर्दोष हि समब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्ररुष्येत् प्रिय प्राप्य नो द्विजे प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेक्ष सक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कोणते न तेषु रमते बुध शक्नोति हे वय सोडू प्राक्षरीरविमोक्षणात् कामक्रोधद्भव वेग स युक्त स सुखी नर यंत सुखोन्तरा रामस्तथान्त ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा छिन्नद्वेदा यतात्मानं सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्ताना यतिना यजते तेषाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनां स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुश्चैवान्तरे युभ्रु प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायणां विगतेच्छाभय क्रोधो य सदा मुक्त एव स भोक्तार यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां न्यात्वा मा शान्तिं मृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच अनाश्रित कर्मफल कार्यकर्म करोति स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय य सन्न्यासमिति प्राहुर्योगत विधि पाण्डव न य सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कञ्चन आरुरुक्षो मुनिर्योग कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषञ्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनं बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो अनविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन सुहृद्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुषपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते योगी युजितः सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचदेशे परितिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मना नात्युश्रित नातिनी च शैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रमन कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये समकाय शिरोग्रीव धारयन्न चलस्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रस्व दिशो चान्नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्यामच्चितो युक्त असित मत्परं युजनेव सदात्मानं योगी नेतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमामसंस्थामधिगच्छति नात्यश्रतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनयत चित्तमात्मत्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमवा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनं यत्र परमते चित्त निरुद्ध योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यन्ति सुखमात्यन्तिक यद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवाय अस्ति तच्चलति तत्त्वतः यद्वाचापरलाभ मन्यतेनाधिक ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तविद्याद दुःखसंयोग वियोगयोगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विणचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषेत मनसेवेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्तत शनै शनैरुपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थमन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत यत यतो निच्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मनेव वशनयेत प्रशान्तमनसहेन योगिन सुखमुत्तमम् उपैन्ति शान्तरजस ब्रह्मभूतमकल्मषं युजनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषं सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनं यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यन्ति तस्य न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यन्ति
सर्वभूतस्थित यो मा भजन्ते कत्वमातिस्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समपश्यन्ति अर्जुन सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत अर्जुन उवाच यो योगस्तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्यान पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिः स्थिराम चञ्चल हि मन कृष्ण सप्रमाथि बलवददृढं तस्य निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयमाभाव मनोदुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत अर्जुन उवाच अयतिषदयोपेतो योगचलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धि कागति कृष्ण गच्छति कच्चिन्न भयविभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नशन्ति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशय कृष्ण चेतुर्मस्य शेषत तदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थनैवेह नामुद्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गति गच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदीदृशं तत्र त बुद्धिसंयोग लभते पर्वदेहिकं अतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दनं पूर्वाभ्यासेन तेनेह ह्रियते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषम् अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परागतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धान्वान् भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोग नाम षष्ठाध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच मया सक्तमना पार्थ योगो युञ्ज मदाश्रय असंशय समग्र मा यथा ज्ञास्यसि तशृणु ज्ञानतः सविज्ञानमिन्द वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वान्य भूतन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कच्चिन्मावेति तत्त्व भूमिरापनलो वायुः मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिविद्धि मे परां जीवभूता मा बाहो यदेत धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा मत परत्तर नान्य किंचिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिन्द प्रत सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमस्मि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनुषु पुण्यगन्ध पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसु जीवना सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलबलवता च कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसच्चये मत एवेति तन्विद्धि न त्वतेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमये भावेरेभिः सर्वमिन्द जगत् मयि तनाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् देवी एषा गुणं मयि मम माया दुरात्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते न मा दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परुतज्ञाना आसुरभावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषा ज्ञानिने ते युक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रिय हि ज्ञानिनोत्यर्थ मह स च मम प्रिय उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थित हे स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिं बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तत नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यया तनुभक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च तत कामान् मय्येव विहितान्नितान् अन्तवन्तु फल तेषा तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तव्यक्तिमापन्न मन्यते माम बुद्धय परभावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाह प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढयो नाभिजानाति लोकममजमव्ययम् वेदाः समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कञ्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप
एषातंतगत पाप जनाना पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमध्यात्मक कर्मजाखिलं साधिभूतादिदेव मा साधियज्ञ ये विदु प्रयाणकालेऽपि च माते विदुर्युक्तचेतस। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोग नाम सप्तमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच कि तद्ब्रह्म किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतच्च कि प्रोक्तम् अधिदेव किमुच्यते अधियज्ञ कतकोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कत नेयोऽसि नेतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संनितम् अधिभूतक्षरो भाव पुरुषच्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरं य प्रयाति स मद्भाव याति नाश्रय संशय ययवापि स्मरन्भाव त्यज्यत्यन्ते कलेवरं ततमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मर युध्ये च मयर्पित मनोर्बुद्धिर्मामेवेश्य च संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमपुरुष दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन् कविपुराण मनुष्यासितार मनोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णतमस परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स्वतः पुरुषमपेति दिव्यं यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागा यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्ते पदसंग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदयि निरुध्य च मुद्याध्यात्मन प्राण मासितो योगधारणा अमितेकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् तप्रयाति ते चन्देह स याति परमागतिम् अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश तस्याः सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ममपेत पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमागता आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रियुगसहस्रान्ता तेहोरात्रविदो जना अव्यक्तादव्यक्तय सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसज्ञके भूतग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवन्ते हरागमे परस्तमास्तु भावन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमागतिं य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिन्दततं यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयातायान्ति काल वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति इहते जगत शाश्वते मते एकाया यत्तनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थो जानन् योगी मुह्यति कञ्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलप्रदिष्टम् अत्यन्ति तत्सर्वमिद विदित्वा योगी परस्थानमुपेति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच इद तु ते विगूयतम प्रवक्ष्याम्यन्न सूयवे ज्ञानविज्ञानसहित यज्ञत्वा मोक्षशेषोभात राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिन्दमुत्तमम् प्रत्यक्षावगत धर्मे सुसुख कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यास्य परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिन्द सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि चाहतेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वर भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतस्थितो नित्यपायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिम कृष्णमवश प्रकृतेवशात् न च मातानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः श्वेते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते
अवजानन्ति मामुडा मानुषी तनुमाशितं परभाव मजानंत मम भूत महेश्वरम मोगाशामग कर्माणो मग ज्ञानाविचेतस राक्षसी मासुरीचे व प्रकृती मोहिनी श्रिता महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नान्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सतत कीर्तयन्तो मा यतन्त च दृढव्रता नमस्यन्त च मा भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञ चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विशतो मुखम् क्रतुर यज्ञ सदाहमहमहम् औषधम् मंत्रोहममेवाजमहमग्निरहूतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्य पवित्रमंकारं रक्षामयजुरेव च गतिभता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरुत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्यम् तपाम्यहम वर्ष निगृहाम्यो सृजामि च अमृतच्चैव मृत्युच्च सद सच्चाहमर्जुनं त्रैविद्यामा सोमपा भूतपापा यज्ञरिष्टा स्वर्गती प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तभुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति एव त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागत कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यम् एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते एष दयान्विता तेऽपि मामेव कन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्ते नात्तच्छवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृज्ञान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रपुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदह भक्तिपरुतमश्नामि प्रयतात्मनं यत्करोषि यदन्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यततपस्यसि कन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलेरेव मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् शूद्राचारो भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवस्थितो हि स क्षिप्रभवति धर्मात्मा शश्वशान्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यन्ति मायि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युपापयोनय श्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिं कि पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखलोकमिं प्राप्य भजस्व माम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेव महात्मानः मत्परायणम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वचम् यत्यह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवन महर्षय अमार्दिनी देवानां महर्षिणा च सर्वज यो मामज मनादि च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढ समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानं समः क्षमा सत्य दम शम सुख दुःख भवभाव भय चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदान यश यश भवन्ति भावाभूतानां मत्त एव पृथक्विदा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषा लोक इमा प्रजा एता विभूति योग च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युजन्ते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विता मच्चिता मद्गतप्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मानित्य पुष्यन्ति च रमन्ति च तेषा सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगत येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महम ज्ञानजतम नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भासता। अर्जुन उवाच परब्रह्म परधाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेव मजं विभुम् आहुस्तामुषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयचैव प्रविशीत् मे सर्वमेतद्रुत मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवान् दानवा स्वयन्मेवात्मनात्मानं वेत्तत्वपुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमशेषेण दिव्यात्मविभूतय याभिर्विभूतिर्भिर्लोका निमास्व व्याप्य तिष्ठसि कथ विद्यामः योगीस्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योग विभूतिश्च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वत नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथ इष्यामि दिव्यात्मविभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितो
अहमादिच मध्यच भूतानामंत एव च आदित्यानाम विष्णु ज्योतिषारविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानासामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासो इंद्रियाणामनच्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्रनाशंकरच्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनापावकच्चास्मि मेरु शिखरिणामहं पुरोदशाच्च मुख्यमा विद्धिपार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामः स्कंद सरसामस्मि सागर महर्षिणा भृगुर गिर्यामस्मेकमक्षरं यज्ञाना जपयज्ञस्मि स्थावराणा हिमालय अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनी उच्चश्रवसमश्वाना विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावत गजेन्द्राणा नराणाच्च धीराधिपम् आयुधानामहं वर्ज धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनचास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तचास्मि नागाना वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहं प्रह्लादच्चास्मि दैत्याना कालकलयतामहं मृगणाच्च मृगेन्द्रो वैनन्ते च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणामकरच्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तच मध्यचैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्यच अहमेवाक्षय कालो धातः विश्वतोमुख मृत्युसर्वहरच्चाहमुद्भवच्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां श्रुतिर्मेधा स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहस्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानामार्गशीर्षोऽहं मृतूना कुसुमागर द्युतश्चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वसत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यः व्यास कवीनामुशना कवि दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमर्जुनं न तदस्ति विना यस्त्यान् मया भूतश्चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिना परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्त्यत्व श्रीमदूर्जितमेव वा ततदेवावगच्छत्व मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन कि ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्यामिन्द कृष्णमेकांशेन तो जगत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्यागर्षश्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोग नाम दशमोऽध्याय ओम श्री परमात्मने नमः अथेकादशोऽध्याय अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमः गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयुक्तवचस्तेन मोहय विगतो मम भवाप्य हि भूतानां तो विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथाथ्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वदर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत एकस्य जगत्कृष्ण पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरं संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमरूपमेश्वरम् अनेकवक्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमालाम्बरधर दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमय देवमनन्त विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मना तत्रैकस्तः जगत्कृष्ण प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्जलिरतभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ मृषिच्च सर्वानुरङ्गाच्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्रनेत्र पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिन गदिन चक्रिणश्च तेजोराशि दीप्तिमन्तमं पश्यामि त्वादुनिरीक्ष समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमं प्रमेयं त्वमक्षर परम दिवेदितव्य त्वमक्ष विश्वस्य परनिधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन स्वपुरुषो मतो मे
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वादीप्तहुताशवक्र स्वतेजसा विश्वमिन्दतपन्तं देवापृथिव्योरिदमन्तरहि व्याप्तत्वैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतरूपमुग्रतवेद लोकत्रयप्यवैथितमहात्मन् अमीहि त्वासुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्घा स्वन्ति त्वात्स्तुतिभिः पुष्कलाभि रुद्रादित्या वसोयेच्च साध्या विश्वेश्विनो मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वा विस्मिता चैव सर्वे रूपमहते बहुवक्रनेत्र महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधर बहुद्रष्टाकरालं द्रष्टालोका प्रव्यथितास्तथाहं नवस्पृश्य दीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननदीप्तविशालनेत्रं द्रष्टा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमच्च विष्णु द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि द्रष्टेव कालानलसन्निभानि दिश्यो न जाने न लभेच्च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास अमीच्च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सेवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासो साहस्मदीयैरपि योद्धमुखे वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते ऋतमाङ्गे यथा नदीना बहोम्बुवेगा समृद्धमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नवलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तज्वलन्पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्राणि समृद्धवेगा लेलीयसेग्रसमानसमन्ता लोकान् समग्रात् वदन्ने ज्वलद्भिः तेजोभिरापुर्य जगत्समग्र भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्यायिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तं ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुजङ्क्ष राज्यसमृद्धं मय्येवेते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन् द्रोणच्च भीष्मच्च जयद्रथश्च कर्ण तथान्यानपि युद्धवीरान् मया हस्तत्व जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सम्पन्नं सञ्जय उवाच तच्छ्रुत्वा वचनकेशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमकृत्वा भूय एवाह कृष्ण सद्गदद भीत प्रणम्य अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रविशन्त्य च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षर सदसत्तत्परयत त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परनिधानं वेत्तासि वेद्य च परच्च धाम त्वया तत विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वप्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नम पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व नमोऽस्तु ते सर्वत स एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्व सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तवेद मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावासार्थं सकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्ष त्वक्षामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य लोकत्रयेऽप्य प्रतिं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकाय प्रसादय त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखैव सख्यु प्रियप्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्व ऋषितोऽस्मि द्रष्टा भयेन च प्रव्यथित मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूप प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेद रूपपरदर्शितमात्मयोगात् तेजोमय विश्वमनन्तमाद्य यन्मे त्वदन्येन द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाद्य यज्ञेन दाने
न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रे एव रूपशक्य अहन्नृलोके द्रष्टु तदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो द्रष्टारूपघोरमिदृढ मम मेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्व तदेव मे रूपमिन्द प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकरूप दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यव पुनर्पुर्महात्मा अर्जुन उवाच द्रष्टेदमानुषरूप तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिगत श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिन्दरूप दृष्टवानसि हन्मन देवा अप्यस्य रूपस्य दर्शनकाङ्क्षिण नाह वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि मायता भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदोऽर्जुन ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुश्च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शनयोग नामेकादशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एव सततयुक्ता ये भक्ता स्वापर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषाके योगवित्तमा। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्यपेतास्ते मे युक्ततमामता ये त्वक्षरं निर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य कुटस्थमचलध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकस्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःख देहवद्भिर्वाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परा अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषां समुद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आद्यस्व मयि बुद्धिविनिवेश निवशिष्यसि मय्येव अत उद्वन् संशय अथ चित्त समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तु धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितो सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततयोगी यथात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यशश्च मे प्रिय अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय समशत्र च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितो तुल्यनिन्दास्तुतिमौनि संतुष्टा येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर एतु धर्म्यामृत मिन्द यथोक्त परिपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्रीभगवान् उवाच इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यविधि एतद्यो वेत्ति तप्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद् क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ यज्ञान एतज्ज्ञान मम तत्क्षेत्रे यच्च यादृक् च यद्विकारी यतच्च यत् स च यो यत्प्रभावच्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीत छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते महाभूतानहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकच्च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुख दुःख संघात चेतना धृति एतक्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्व मदन्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासना शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिषङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यच्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानने योग्येन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान
तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यतत्तज्ञता ज्ञेय यत्प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वात् मृतमश्नुते अनादिमत्परब्रह्म न सत्तन्नास सदुच्यते सर्वतः पाणिपाद तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्त सर्वभूत्येव निर्गुणसुगुणभोक्तृ च बहिरन्त च भूतानां चरचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत् अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितः अभूतभर्तुच्च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णुच्च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञाननेय ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्र तथा ज्ञानय नेय चोक्तसमासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिपुरुष चैव विधयनादि उभावपि विकाराच्च गुणाचैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् कारणगुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्नेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष पर य एव वेत्ति पुरुष प्रकृतिश्च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणा यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वस्थावरजङ्गमं क्षत्रक्षत्रज्ञसंयोगाद्विद्धि भरतर्षभ समस्तर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरं विनश्यन्त य पश्यन्ति स पश्यन्ति समपश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परागतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यन्ति तथा आत्मानं कर्तारस पश्यन्ति यदा भूतपृथग्भावमेकस्तमनुपश्यन्ति तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्य मे तदा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतः सूक्ष्मादाकांश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयतेक कृष्णलोकमिं रवि क्षेत्रक्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रयोरेव मंतर ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षच ये विदुर्यन्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोग नाम त्रयोदशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच परभूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानन्दमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गता इदज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासा ब्रह्ममद्यो निरः बीजप्रदपिता सत्वरजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबन्धन्ति मा बाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वनिर्मलत्वा प्रकाशकमयं सुखसंगेन बन्धाति ज्ञानसंगेन जानग रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्मसंगेन नैनं तमस्वज्ञानजो विद्धि मोहन सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा भीस्त निबन्धान्ति भारत सत्वसुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत रजस्तमच्चाभिभूय सत्व भवति भारत रजसत्वतमच्चैव तमसत्वरजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विरुद्ध सत्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नन्दनं यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृतो तत्त्वमविन्दा लोकान् मला प्रतिपन्दे तद्दोत्तमविन्दा लोकान् मला प्रतिपद्यते रजसि प्रलय गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहु सात्विक निर्मलफलं रजसस्तु
रजसस्तु फल दुःखम् अज्ञानं तमस फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च उद्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अजगण्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यगुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यः च परवेति मद्भावसोऽधि गच्छति गुणानेतानतीन्त्य त्रेन्दे हि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच केलिङ्ग्रे श्रीगुणान्नेतानतीतो भवति च प्रभो किमाचार कथः चेता श्रीगुणान् अतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीन गुणैयो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस उच्यते माचयो वै विचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येता ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मण हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखं सेकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच उदमूलमदशाकमश्वन्त प्राहुर्व्याम छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तवेदस वेदवित् अधोच प्रशास शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधच मूलानो संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमे सतोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्पृष्टा अश्वत्थमेन सुदृढमूलम् असङ्गशस्त्रेन्द्रियं चित्वा ततः पद तत्परिमार्गित वै यस्मिन् गन्ता निवन्तति भूय तमेव चान्द्य पुरुषो प्रपन्दे यतः प्रवृत्ति प्रस्तापराणि निर्माणमोह जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसौ गच्छन्ते मुडा पदमव्यय तत् न तद्भासते सूर्येण शशाङ्कं पावक यद्गत्वा निवन्तते तद्धाम परं मम ममयांश जीवलोके जीवभूत सनातन मम श्रेष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति शरीरे यद्वाप्नोति यच्चाप्युक्रान्तीश्वर गृहीते तानि संयान्ति वायुर्गन्धानि वाशयत् शत्रुचक्षुस्पर्शन च रसनघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्च विषानुपसेवते उत्क्रामन्तसीत वा भुजान्न वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यत्तन्तोगेन चेन पच्यत्यात्मन्यव्यवस्थितं यत्तन्तोऽप्यकृतात्मानेन पच्यन्ते चेतसः यदाधिगते तेजो जगद्भास्यते किलं यच्चन्द्रस्य यच्चग्नत् तेजोविधि मां कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमजिषा पुष्पाञ्जलि सर्वा सोमभूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनादेहमाश्रितो प्राणपानसमयुक्त पंचान्मेन चतुर्विधं सर्वस्य च हृदयि सन्निविष्टो मतश्रुतिज्ञानमपोहन च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतेदविदेव चाहं धौम्य पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेन धारित य लोकत्रयमाविश्य बिभर्ते वे ईश्वर यस्माक्षरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तम यो मां सम्बुड जानाति पुरुषोत्तम ससरिध्वजन्ति मा सर्वभावेन भारत इति गुह्यतम शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतदत्वा बुधा बुद्धिमा सकृतकृत च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमे नाम पंचदशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दम च यज्ञ च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्व लोलुस्व मार्दव हीर चापलम् तेज क्षमा धृति शोच मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति सम्पदा देवीं बीजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमान च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानाचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पद देवीं बीजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तर च प्रोक्त आसुर पार्थ मे शृणु प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शोचनापि चाचारो न सत्यतेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् काम हेतुकम् एतादृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धय प्रभवत्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता काममाश्रिता दुष्पुर दममानमदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेया च प्रलयन्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशते बद्धा कामक्रोध प्रयाणा
यन्ते कामभोगार्थ मन्यायनार्थ संचयन इदमद्य मया लब्धमें प्रासे मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम असो मया हत शत्रुः निश्चय चापरानपि ईश्वरोऽहम भोगी सिद्धोः बलवान् सुखी आड्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि यमोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्य दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकार बलदर्प कामक्रोधोच्च संशिता मामात्मा परदेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका तान् द्विषन्तो क्रूरान् संसारेषु नराधमानं क्षिपामजस्रं शुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिं त्रिविधनरकस्य द्वारनाशनमात्मनं कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्माद्देतत्रयते जित एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे श्रीभिन्नर आचरन्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिं यशास्त्रविधिं मृसुज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परागतिं तस्मात् शास्त्रप्रमाणते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमीमांसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोऽध्याय श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिं सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्सत्त्वमाहो रजसम श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरंसांसि राजसा प्रेताद्भूतगणाचान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रवित घोर तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थ भूतग्राममचेतस मा चैवान्त शरीरस्थ तन्विद्यासुरनिश्चयन आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति पर्यय अज्ञस्तपस्तथा दान तेषा भेदमिं शृणु आयुसत्व बलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वं लवणा तीक्ष्ण वृक्ष विदायिन आहारा राजसच्चेषा दुःख शोकमय प्रदा यातायाम गतरस पूति पर्योषित च यद उच्छिष्टमपि चामेद्य भोजन तामस प्रियम अफलाकांक्षी बिर्यज्ञ विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मन समाधाय च सात्विक अभिसंधाय तु फल दंभार्थमपि चेवयत इजते भरत श्रेष्ठत यज्ञ विधि राजसम विधीनं सृष्टान्न मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस परिचक्षते देवदीज गुरु प्राज्ञ पूजन शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरतप उच्यते अनुद्वेगकर वाक्य सत्यप्रिय हि तच्ययत स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाङ्मय तप उच्यते मनप्रसाद सौमत्व मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्त तपस्तवित्रिविध नरे अफलाकांक्षीभिर्युक्ते सात्विक परिचक्षते सत्कारमानं पूजार्थ तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्त राजसचलव ध्रुवं मूढग्रायणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप परस्योस्यादनार्थ वा तत्ताम समुदाहृतं दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विक स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दान राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्य च दीयते असत्कृतमवज्ञात तत्ताम समुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण श्रीविद स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाच यज्ञाच वेता पुरा तस्माद्दो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनां तरित्यनभिसन्धाय फल यज्ञ तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुञ्जते प्रशस्ते कर्मणि सदा सच्शब्दपार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुत दत्त दन्त तपस्तं कृतच्च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोग नाम सप्तदशोऽध्याय ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्याय अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभव तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन् श्रीभगवानुवाच काम्याना कर्मणा न्यास संन्यास कवयो विदु सर्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणा त्याज्य देवशवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान तपकर्मण त्याज्यमिति चापरे निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित यज्ञदान तपकर्मण त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञदान तपचैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि
तू कर्माणि संगतता फलानि च कर्तव्यानि ति मे पार्थ निश्चितमन्तमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मण नोपपद्यते नमः तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत सकृत राजस त्याग नैव त्याग फल लभेत कार्यमित्येव यत्कर्म नियत क्रियते अर्जुन संगतता फल चैव स त्याग सात्विको मत न द्वेष्ट कुशल कर्म कुशले नानुषञ्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय न हि देहभृता शक्य त्यक्तु कर्माणे शेषत यस्तु कर्मफल त्यागी न त्यागित्य विधीयते अनिष्टमिष्टमिष्ट च त्रिविध कर्मण फलम भवत्य त्यागिना प्रत्य न तु संन्यासिना क्वचित् पच्यतानि मा भाव कारणानि निबोध मे सांख्यकृतान्ते प्रक्तानि सिद्धै सर्व कर्मणाम अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक्विधम विविधा च पृथक् वेष्टा दैव चैवात्र पंचम शरीर वाङ्मन वीर्यत् कर्म प्रारभते नर न्याय वा विपरीत वा पच्यन्ते तस्य हेतव तत्रैव सति कर्तारमात्मान केवल तुय पश्यन्त्य कृत बुद्धित्वा न स पश्यन्ति दुर्मति यस्य न कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् हन्ति न निबन्धते ज्ञाननेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करण कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहम ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदत प्रचते गुणसंख्याने यथा वचृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमिच्छति अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानविधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञान नाना भावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विधि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्प च तत्तामसमुदाहृतं नियतसङ्गरहितं रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतः सात्विक मुच्यते यत्तु कामेस्पुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धक्षय हिंसा मनवेक्षच्च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृतिस्साह समन्वित सिद्धय सिद्धय निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो निष्कृति कलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिभेद धृते चैव गुणतः श्रीविध शृणु प्रच्यमानं शेषेण पृथक्वेन धनंजय प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य भयाभये बंधमोक्ष च यावेति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्म च कार्यचाकर्यमेव च अयथाव प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी अधर्मधर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वान्धान विपरीता च बुद्धिसा पार्थ तामसी धृत्या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यविचारिण्या धृतिसा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थ धृत्या धारयत्यर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिसा पार्थ राजसी यया स्वप्नवयशोक विषाद मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिसा पार्थ राजसी सुखत्विदानि त्रिविध शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तश्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपवं तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद्यतदग्रे मृतोपवं परिणामे विषमिव तत्सुख राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखमोहनमात्मनं निद्रालस्य प्रमाद तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वप्रकृतिजे मुक्त यदेभिः सात्रिभिः गुणे ब्राह्मणक्षत्रिय विशा शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे शमोदमस्तप शौच राजवमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शर्यते जधुति दाक्ष युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावच क्षात्रकर्म स्वभावजम कृषिक रक्ष वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम स्वेसे कर्मण्याभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा विदन्ति तच्छृणु यत प्रवृत्तिभूताना येन सर्वमिद ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विदन्ति मानव श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहज कर्म कन्तेय सदोषमपि त्यजेत स्वरारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिप्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेयो निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्माननियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विविधश्च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानस ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य समुपाश्रित अहंकार बलदर्प काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मसुत
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम भक्त्या माम बीजानाति यावन्यच्चास्मि तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतपदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्त मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित सतत भव मच्चित सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारान्न शोचसि विनक्षंसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वानियोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुमिच्छसि यन्महान् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शान्तिः स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति तेनानमाख्यात गुह्याद् मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामैक शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्य न च मायोभ्य श्रूयति य इम परं गुह्य मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परा कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि अध्यक्षते च य इम धर्म्य संवादमावयो ज्ञानयज्ञेय तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावान् न सूय च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तशुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतश्रुत पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसमूहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम शोच मद्भुतरोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुत वानेतद्गुह्यमहं परम योगयोगेश्वरा कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजसंस्कृत संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्य हर्षामिच मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत रूपमत्यद्भुत हरे विस्मयो मे महान् राज हर्षामिच पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयभृति ध्रुवा नीतिमति मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः।